Hello, my dear students. How are you guys doing? I hope all of you are doing amazing. All of you are doing great. I am great as well. I am Nandini. I am your educator and mentor. I am taking your verbal ability section ले रही हूँ मैं आपका for all the entrance exams out there. After 12th courses हम लोग cover कर रहे हैं यहाँ पर so that our students don't face problem. हम 11th and 12th तो पूरा cover करा ही रहे हैं for humanities and commerce students. We're also focusing upon all the entrance tests in case you have guys have any problem with that. You can get yourself enrolled. आप हमारे साथ enrollment लेकर सारा course access कर सकते हैं because ultimately बहुत important है aptitude को जानना. It's more than just class 11th and 12th and your basic English. Correct. Not basic English also reasoning है. बहुत सारे sections हैं. GK है. Where do we have to read? See, every day thousands oodles of news. Again, there's so much irrelevant information that's there on the internet, say everywhere there is so much irrelevant, but we have to pick up the best. What we have to do for the exam is important, and hence we are only covering that is important for your exam. All right, so I have also appeared for CLAT like 3 times. मैं अपीयर कर चुकी हूँ क्लैट के लिए. आई अपीयर्ड इन 2018, 19, 20 एज वेल. आई गॉट अ वेरी ग्रेट रैंक. मेरे को बहुत अच्छी रैंक मिली थी बट आई डिडंट वांट टू गो टू दैट कॉलेज बिकॉज आई गॉट एनएलयू पटियाला. ठीक है, मेरे को सबसे अच्छा एनएलयू पटियाला मिला था. आई वांट टू टेल यू आई गॉट पटना ऑल्सो. उड़ीसा मिल गया था एनएलयू. दैट वुड बी अ ड्रीम कॉलेज फॉर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स बट आई वांटेड टू गेट इनटू अ टॉप 3 कॉलेज. ठीक है, मैं टॉप 3 कॉलेजेस में जाना रही थी. दैट आर बैंगलोर है या हैदराबाद में है. आई वांट टू गो टू दीज एनएलयूज सो आई कुड नॉट मेक इट. कोई बात नहीं, देयर इज नथिंग टू बी डिसअपॉइंटेड बट वी हैव टू गिव आवर बेस्ट. आई गेव माय बेस्ट बट कंपटीशन इज सो मच नाउ. 80,000 90,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं क्लैट में. आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल ऑफ क्लैट. देयर इज क्राइस्ट यूनिवर्सिटी का CUET. देयर आर मेनी अदर एंट्रेंस एग्जाम्स. IP मैट ये सब के लिए GD भी होता है, इंटरव्यू भी होता है. सो यू शुड नो हाउ डू वी अपीयर फॉर दैट. ऑलराइट, सो गोकुल सर कीप्स मेंटरिंग यू, आपको बताते रहते हैं. लेट्स जस्ट लुक एट द सिलेबस. टुडे वी आर गोइंग टू कवर सेंटेंस करेक्शन. हम लोग आर्टिकल्स पढ़ने वाले अ एंड द. ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है. इट माइट नॉट सीम इंपॉर्टेंट. लगता है यार ये तो हम कर ही लेंगे बट इट्स नॉट द केस. लॉट ऑफ स्टूडेंट्स स्टम्बल हियर, यहाँ पर गिरते हैं एंड दे सफर बिकॉज उन्होंने ढंग से नहीं पढ़ा होता. So and हम बात पढ़ने वाले we're going to talk about articles today. Part 1 है ये. There is also part 2 जहाँ पर हम पूरा complete कर देंगे articles. Right. So what are articles? Articles are and the. And the. Right. So sentence correction questions are designed to test your ability to identify grammatically correct. So your ability to identify which one is the grammatically correct question is the main reason why they give you such questions. Sometimes you don't understand that and the question and the कहाँ लगना है, कहाँ हम specific बात कर रहे हैं, कहाँ हम general बात कर रहे हैं. So that is where we have to be experts. We have to know. You have to choose the underlined portion that is the mistake and you have to answer. So 2 very important characteristics देखो यहाँ पर. 2 important characteristics are कि तो grammatical mistake नहीं होनी चाहिए और sentence का structure ठीक होना चाहिए. Here we are mostly going to talk about articles और sentence का structure कैसे improve होना है. We are going to talk about in subsequent videos. And there are lot of questions जो based है sentence correction के ऊपर जो app पर upload हो चुके हैं. We'll discuss those questions once you guys have solved it. Right? So it is important कि आप पहले solve कर लो. ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस करेक्शन होना चाहिए और ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए. Let's talk about and the. So you read the entire sentence with your selected answer choice. We have to have a very powerful tip. अब उन्होंने क्या powerful tip बनाई है कि you have to trust your. What is this? I know bad drawing है, but this is a year. ठीक है, बहुत सारे एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं कि we say it or not, we have to stick by the rule. That's right. But sometimes you have to, you have to see your instinct as well. Whatever your hears is so much better. कभी कभी क्या होता है, ऐसे मत कह, अब ये मत बोलना कि हमें तो सब आंसर्स ठीक लगते हैं. नो, देयर इज वन परफेक्ट आंसर जो हमें लगता है कि ठीक है, वही ठीक आंसर होता है. सो जो तुम्हारी इंस्टिंक्ट कह रही है, व्हाटएवर यू हियर इज राइट. So this happens in a lot of questions, but in a lot of questions you have to stick by the rules as well, right? So we look at the questions now. This इतना experience कहाँ से आता है? This experience comes with solving a lot of questions, right? So यहाँ देखो, in the modern era, face-to-face communication is becoming near as
uncommon as handwritten letters. So nearly hoga is don't you think communication is becoming nearly as nearly word is better than near, and hence wrong है ये, it should be nearly as uncommon as handwritten letters. So हम यही देखेंगे कि इसका करेक्ट आंसर देखेंगे. If you read the sentence aloud, you automatically will replace near with nearly, which is the correct word in this case. Nearly becoming nearly होगा, becoming near तो नहीं होगा, becoming nearly as uncommon as, right? So ऐसे ही होता है. This was just one example that was given. वो इससे हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये एग्जाम्पल दिया हुआ था कि sometimes you have to look at your instinct and trust your instinct as well. You have to trust whatever your ear says. So ear says me whatever your hears and whatever your instinct says. So there are few grammatical rules that we're going to look at. First we're going to look at articles, right? So common usage कहाँ होता है and का, which are indefinite articles and the is the definite article. हमें कोई जरूरत नहीं है कि हमें कहीं लिखना नहीं है कि and the indefinite है या the definite है, ये notes तो आपको मिल ही जाएंगे. Is used before consonants. Now what are consonants? A, E, I, O, U. All of these are vowels. We don't call them vowels. नहीं बोलते हैं इन्हें, vowels बोलते हैं, ठीक है? Vowels, vowels. ऐसे याद रख लेना. We call them vowels. And A, E, I, O, U are all vowels, and all other words except vowels, जैसे B, C, D, E तो vowel है, F, G, H. So all of these are what? All of these are consonants. There are 26 letters in English, and these 5 are A, E, I, O, U is what? Are vowels, and rest of them are consonants. Right? So when we do not refer to a specific object, make sure कि कभी भी हम specific object की अगर बात करेंगे तो हम the use करेंगे. That is why definite article the है. And whenever we talk about indefinite articles, we use a and an. A and I said this. ठीक है, इन दोनों का हम लोग यूज कर रहे होंगे. So when we say a case, we mean by any case. We mean any case. ठीक है, देखो पता है एक्चुअली में अ का मतलब क्या होता है? अ का मतलब होता है any. We use a in case of any. So you have a lot of tissue papers. All of these tissue papers look alike. So you will never say in case there's a pink color का tissue paper उन सब whites में. So you say give me that tissue paper. Then you mean you're talking about general pink one. But in case all of these are white, give me a tissue paper. कोई सा भी दे दो, ये white दे दो, ये white दे दो, इनमें कोई फर्क तो है नहीं. So you give me any. अ का मतलब any होता है. अ हमेशा हम any के लिए यूज करते हैं. Give me any. So when we say a case, we mean any case. We would say the case जब हम specific, जैसे मैं pink tissue को, pink napkin को रेफर कर रही हूँ. The case means we are referring to a particular one. अगर हम particular को रेफर कर रहे हैं, then it is a case of definite article which is the. So and कब यूज होता है? And is used before vowels. Vowels या vowel sound भी लिख सकते हो आप. You can write it down, vowel and vowel sounds as well. And some consonants also. Vowel sounds ही consonants होती हैं when we do not pronounce the first letter in an R where H is silent. A lot of H words, it's not H, it's H. H वाले जो words होते हैं, जैसे for instance in an hour. Why did we not call it in a R? देखो अ तो क्या है? consonant है, but हमें vowel sound भी देखनी है. We call it R. ठीक है, we call it R as if H does not exist. So we always call it an R. Alright, is this pretty cool? ये बात समझ आई? तो वाउल साउंड्स में भी हम हमेशा एन यूज करते हैं. अ हम यूज करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट्स. एंड अ मींस व्हाट? अ मींस एनी. सो अ एंड आर यूज्ड इन एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी आल्सो. थ्राइस अ वीक, 4 times an hour. थ्राइस द वीक नहीं बोलते हैं, थ्राइस अ वीक बोलते हैं, बिकॉज दे आर यूज्ड इन एक्सप्रेशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी. नाउ दिस इज अ थिंग टू बी लर्न्ड. ये बात है आपको लर्न होनी चाहिए कि हाँ ऐसा होता है. टू बी लर्न. सो थ्राइस अ वीक, 4 times a week. How many times a day do you wash your hair? How many times a day do you bathe? So all of but bathe,
बाथ बोलते हैं वैसे और बेदिंग बोलते हैं। हाउ मेनी टाइम्स अ डे डू यू बाथ? बेदिंग। और एक्शन जब वर्ब यू डूइंग इट, सो बेदिंग हो जाता है। सो द इज यूज्ड विद सन, वन ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। द तब भी यूज करता है जब वन ऑफ अ काइंड है। द सन, द मून, द स्टार्स। क्यों? और स्टार्स कहीं ऐसे कहीं मिल जाते हैं, सिर्फ वहीं मिलते हैं ना। सन एक ही है, कुछ लिमिटेड स्टार्स ही हैं, अनकाउंटेबल स्टार्स हैं ऑफ कोर्स, बट है तो एक जेनरिक टाइप ही, द सन, द मून। सो वी यूज द देन। इन सुपरलेटिव्स, सुपरलेटिव्स मतलब होती है थर्ड डिग्री। थर्ड डिग्री मीन्स द बेस्ट, द फास्टेस्ट, द कूलेस्ट। वी ऑलवेज यूज द, राइट। बट हम फर्स्ट सेकंड डिग्री में कभी भी द यूज नहीं करते, राइट। ही इज बेटर दैन मी, वी ऑलवेज यूज ही इज बेटर दैन मी। He is faster than me, but he's the best, he's the fastest, right? So when we refer again to something that has been referred one, as in जब हम the का और कब यूज करते हैं? जब कोई चीज ऑलरेडी रेफर हो चुकी है और हम उसे दोबारा रेफर कर रहे हैं। Going with the wind is a book worth reading, the book। देखो, going with the wind is the name of a book, going with the wind is a book worth reading है, book है, एक book है ये, ठीक है। इस द बुक नहीं बोलेंगे बिकॉज दैट्स अ नेम पर्टिकुलर, ये एक है, दिस इज एनी बुक, ठीक है, वर्थ रीडिंग है। द बुक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ मास्टरपीस, ये मास्टरपीस है। सो द इज यूज्ड इन केस व्हेन वी रेफर टू समथिंग दैट हैज ऑलरेडी बीन स्टेटेड। सो इंडिकेट ग्रुप्स और क्लासेस, द इंडियंस, द यूथ, द एजेड भी बोलते हैं जैसे। सो जब हम रेफर कर रहे हो देन वी ऑलवेज यूज वर्ड द बिफोर एनी नाउन। नाउ वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि ये जो ओ एंड दो होते हैं ये लगते हैं बिफोर अ नाउन ही है, और ये नाउन भी हमेशा सिंगुलर होता है, कभी भी प्लूरल नाउन के आगे नहीं लगते हैं ये, राइट, सिंगुलर। ये बात याद रखना, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग टू नो। ऑलराइट, बिफोर ओशंस, सीज, रिवर, आइलैंड, माउंटेन्स, ये सब जो चीजें होती है, ज्योग्राफिकल चीजें जो होती हैं, ओशन, सीज, रिवर्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। Now countries will plural names and noun forms of the compass as in the Atlantic Ocean, the North, the South। ये सब चीजों के आगे seas जो होते हैं, rivers होते हैं, all of these islands and mountain chains, deserts जो होते हैं, so all of these things इनके आगे भी द लगता है। the Atlantic Ocean है, the North है। So you can take a lot of example, जो भी deserts होते हैं, ये सब the Thar डेजर्ट। तो ये सब के पहले क्या लगता है? इन सब के पहले द लगता है। यू शुड नो दिस। कोई भी आपके सामने डेजर्ट, सीज, ज्योग्राफिकल लोकेशन आ जाए तो आपको द लगाना है। इन फ्रंट ऑफ एनी नाउन द लिसनर और रीडर ऑलरेडी नोज अबाउट इट। माई कार इज अ मारुति, एक मारुति है मेरी कार, बहुत सारी मारुति मैन्युफैक्चर होती है और उनमें से एक मेरी कार है। द मारुति जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इज अ रिलायबल कार, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करें। सो द इज यूज्ड टू रेफर समथिंग यू हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। देन बिफोर नेम्स ऑफ होटल्स ऑफ आल्सो द ताज, है ना। फिर ये इन फ्रंट ऑफ एनी नाउन द लिसनर और रीडर ऑलरेडी नोज अबाउट, तो लिसनर को पता है कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। द मारुति आई एम टॉकिंग अबाउट, द मारुति से पता है कि मैं अपनी मारुति की बात कर रही हूँ, ठीक है, ये बात समझ लेना। फिर हिल्टन्स है, इंस्ट्रूमेंट्स के नाम है, या फिर लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस के हैं, द यूनाइटेड नेशंस, द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, द हिंदू, इन सब के आगे द लगता ही लगता है। द टाइम्स ऑफ इंडिया, ऐसे होता है। ऑलराइट, देन देयर आर सम क्वेश्चंस, लेट्स लुक एट दीज क्वेश्चंस। देन देयर आर टन्स ऑफ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, नॉट टन्स, मतलब आई मीन अ लिस्ट लॉन्ग ऑफ क्वेश्चंस दैट हैव बीन गिवन टू यू to practice. You can practice these questions at home and doubts will be taken up next session में। Someone with a beard had come to meet you, फिर यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। meet dash you, meet the you, meet a you, meet and you, no, someone with a beard had come to meet you। देखो इसका आंसर देख लेते हैं, a और no आर्टिकल है इसका आंसर, राइट। तो ऐसे ही हमें सॉल्व करने हैं। If a trial is on today, why have you not sent me the case paper? If no, we are talking about a particular trial। देखो यही गलती होती है। If the trial, we are talking about the particular trial, तो तुमने वो वाले केस पेपर्स क्यों नहीं भेजे? So correct answer is going to be the। देख ले एक बार कि हाँ देखो करेक्ट आंसर यही है। बात समझ आई? So it takes 1 घंटा, an hour and a half to get to his office। कोई यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा।
Alright, so you can solve these questions. I'll solve Rajdhani Express newspaper है. Now, अच्छा राजधानी एक्सप्रेस नहीं, दोबारा लेना इसे, बिल्कुल गलत बोल दिया, दोबारा लेना. Now the Rajdhani Express is a train. Now stops at a few more stations आएगा, right? Then ये इसका आंसर, the and a बिल्कुल करेक्ट है. And a और no article था, उससे पहले हम चेक कर लें. And a और no article बिल्कुल करेक्ट है. ऐसे ही हमें करना है. It is truly an honor to meet the president. Particular president की बात करें, the president of India, the prime minister, we always use the. Correct. 5 questions solve कर दिए आपके लिए. You have to solve all the questions that have been uploaded on the app. Alright, I hope this video was useful. समझ आया होगा and the. हम लोग इसे बहुत हवा में लेते हैं, but it is not as easy and हमें इसे पढ़ना है so as to solve the questions of sentence correction के questions क्या क्या गलत है question में, हम वो question solve कर सकें. If you haven't enrolled yourself, अभी आप जाकर enroll कर सकते हैं हमारे साथ. In case you want to have access of whole of the videos, whole of the course, we are trying to cover general knowledge है, चाहे reasoning, maths, quant, you call it, verbal ability, सब कुछ cover हो रहा है at one place. You do not need to go anywhere else. Alright, I am ending this session part 1 यही खत्म हो रहा है articles का. And कोई doubts है, do let me know in the comment box. And I will see you guys super soon. Till then, take care and keep watching. Bye bye.